हाय, मैं हूं अनुराग द डूड और ये है प्रिया माय दीवानी. And we're here to take you on an incredible journey. Wait. Don't forget to like, share and comment on our video. Also, click on the subscribe button. And for more videos on ZZest, don't forget to hit the bell icon. पिछले 20 साल से हम साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं. नए प्लेसेस, नए कल्चर्स, नया फूड. Then we discover कैसे एक चीज दूसरे से कनेक्टेड है. The what, where, when, why of food. That's our passion. सतरंगी फूड. Atrangi Connection. Join us on Dude और दीवानी. What's the big global issue you're thinking about, Anu? बेबी, मैं सोच रहा था कि आज लखनवी बिरयानी खाया जाए या कोलकाता बिरयानी विद आलू, you know? Just, oh, that's the big decision you were thinking about. एक तो राइस, ऊपर से आलू, मतलब कार्ब प्लस कार्ब. अरे छोड़ो ये बेकार की बातों को. ये कोलकाता बिरयानी को ज्यादा लाइटली मत लेना. बात तब की है 1856 में ब्रिटिशर्स ने अवध को एनेक्स कर लिया. द एनेक्सेशन ऑफ अवध तुमने पढ़ा होगा हिस्ट्री में. और जो उनके आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको एग्जाइल कर दिया कलकत्ता. अब उनके साथ उनके सारे चेले चपाटे भी गए और ब्रिटिशर्स से उनको मिलता था 12 लाख एनुअल पेंशन और नवाब के नवाबी शौक, यू नो. अब खाने पीने के तो सबको बिरयानी में वो गोश्त कैसे खिलाते. तो मेरी खाला, उन्होंने बिरयानी में आलू डाला एंड जो उनका ऑस्टेरिटी मेजर था वो पॉस्टेरिटी के लिए कोलकाता बिरयानी का सिग्नेचर स्टाइल बन गया. Big deal. I don't expect you South Indian fellows to be passionate about finer things of life like biryani. For your kind information, way before pilav and biryani came from Persia to India, in the 2nd century AD, there are Tamil scriptures that talk of poon soru, which is a rice dish made of ghee, rice and meat with some spices like bay leaves, pepper, turmeric and coriander. This was given as a precursor to the biryani to the warriors of that. पर जहां तक मैंने सुना है, the biryani was introduced to India sometime around 1398 by अपना वो लंगड़ा त्यागी. What? अरे I mean तैमूर द लेम यार, तैमूर लंग. स्टोरी नहीं पता तुमको? कहते हैं कि जब बैटल टाइम में वो लोग क्या करते थे, अंडरग्राउंड पिट में एक बड़े से हांडी में मीट, स्पाइसेस, मसाले सब डाल करके कुक करते थे और फिर बाद में खोद करके सोल्जर्स को सर्व कर देते थे. और सोचो कैंप का लोकेशन भी सीक्रेट रहता था. But biryani came at such a heavy price. Taimur slaughtered 1 lakh people in Delhi. वो तो है. पर ये बिरयानी का बैटल के साथ कुछ तो कनेक्शन भी है, क्योंकि एक थ्योरी ये भी है कि इट वाज परफेक्टेड और रिफाइंड अंडर द मुगल्स ड्यूरिंग शाहजहांस रेन. और उनकी मिसेज है ना, क्या, मुमताज महल. हाँ, तो वो एक दिन गई मिलिट्री बैरक्स और उसने देखा कि सोल्जर्स की तो हालत एकदम टाइट है. तो उसने खानसामे को बुलाया और बोला इनके लिए एक बड़ा ही न्यूट्रिशियस मील बनाओ विथ मीट, स्पाइसेस, आलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स, एंड दैट वाज द प्रीकर्सर टू अ बिरयानी. Really? हाँ, If you know so much about biryani, why don't you go and make some? इसमें क्या है? अब बताओ. How many biryanis do your North Indian fellows have? So many. Kolkata biryani, then my Avdi biryani, Lucknowi biryani. Our is a region. Lucknow is its capital. So it's same to same. Next. अरे हाँ, that दिल्ली का बिरयानी, जामा मस्जिद वाला, and that मुरादाबादी बिरयानी. Muradabadi? Never heard of it. It is Rampuri also.
I've heard of Rampuri chaku, not biryani. Are you sure you're not talking about pulao? Biryani, pulao, same thing, Baba. No, it's not, you dolt. Pulao comes from pilaf or pulov from Persia, and it is cooked with the absorption method, where the rice and the meat is all put together in a pot, stirred with a ladle, and allowed to cook in its own stock. Biryani comes from biryan or birenj, which is to fry before cooking. So the rice and the meat is put in layers and then cooked inside on a dum. Should I go on? अबे so aggressive यार. वैसे बहुत तुम चहक रही हो. ये बताना किसमें कितना है दम. साउथ से कितने बिरयानीज हैं? Are you ready? Ambur biryani, Bangalore donne biryani, Bhatkal biryani, Hoskote biryani, Hyderabadi dum biryani, Mapla biryani or Telcheri biryani, Dindigul talpakatti biryani. Should I go on? Kalyani biryani. बाप रे, so aggressive यार. Also, there's a theory that the biryani came to the Malabar coast from the Arab traders. But interestingly, the Mapla Patu or the ballads of North Kerala, they talk of Ali getting nostalgic and homesick about his mother's nei choru, which is ghee rice, not the biryani when he returns from battle. बाप रे, तुम तो मेरे से ही बैटल करने लग गई. Don't mess with the Coog warrior princess. And don't even get me started on pulaus. I mean, we've got the Coog Gerti pulao, which you eat by the bucket loads. And then there's the Malnad pulao, the veg pulao. बाप रे, इतना hyper? These must be all hyper local names for the same thing यार. Each one is different, you duffer. The Hyderabadi version is a kachi version where the raw rice and the meat are cooked together. In fact, the Nizam's kitchen had such exotic varieties, nearly 40 kinds of quail, deer, hare, fish, prawn, everything. And then there's the Shivaji Military Hotel, the Donne Biryani, which is special because of the donne or the sal leaf container, which gives a good flavor to it. Dindigal Talpakatti Biryani, which uses the small Jirgesana rice, which is so fragrant. No basmati, huh? All third-rate local stuff. No legacy, no history, nothing. You don't know crap about history. The Kalyani Biryani originated in Bidar. The Kalyani Nawabs, actually one of them married the Asif Jani family of Hyderabad. And so they migrated to Hyderabad. When their followers or subjects went to meet them in their Devi or mansion, they served them Kalyani Biryani there. और वो जो तुम्हारा होस्कोटे बिरयानी है ना, जिसके लिए लोग लाइन लगाते हैं सुबह सुबह, एकदम बेकार, फ्राइड राइस की तरह. और वो जो तुम्हारा अंबूर बिरयानी जो गली गली में मिलता है, क्या है वो? Bogus! Huh. Tell that to the Nawabs of Arcot. In fact, Ambur biryani originated as the Arcot biryani under their rule. When the British took over the princely state, the Khansamas of the Nawabs of Arcot actually migrated to the nearby places. In fact, Hussain Bey was the one who created his own recipe in 1890, and he started supplying it in large quantities at weddings. Later on, when Star Biryani opened on the Chennai-Bangalore highway, that's when Ambur Biryani catapulted to fame. That's legacy and history for you. ये जो तहरी है ना, जिसको बोलते हैं वेजिटेरियन बिरयानी, it was made specially under the Nawabs of North India in Awadh, Delhi, उनके वेजिटेरियन बुक कीपर्स के लिए, जो उनके अकाउंटेंट्स थे. Tehri to, I have heard that it actually developed under Tipu Sultan of Mysore. बाबा इतना बड़ा देश है, कौन कहाँ ट्रैक रखेगा? मुझे तो लगता है कि जीत बिरयानी की हुई है. तुमको पता है अच्छे बिरयानी की क्या निशानी है? उसको जमीन पे फेंको ना, तो एक एक दाना अलग होना चाहिए. Wow. What is the great biryani that you have prepared? Nawab of nowhere. बिरयानी? Shit! मैं तो भूल ही गया. हमारी पलटने हो गया.
सॉरी बेबी, आज बिरयानी का प्लान कैंसिल। आज कर्टेज खाती ना, थोड़ा पेट को भी ठंडा रखिएगा और क्लीन योर कैनल्स। ये बिरयानी है या फिश पैश? Shut up, Jaffa. I was painting. Where the... Sorry, I'll take that again. बार बार कथा में विघ्न। क्या? जी Zest को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा कोई नया वीडियो मिस ना हो।